Hello dear students, I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So children, yes, we are learning chapter number 4, that is Mowgli joins the wolf pack. Yes children, so before moving to the next part of the story, let's recall what we have learned in our previous class, in our last class. So children, in the last class we have discussed there are 8 main characters, animal characters in this story. Yes? See here, mother wolf, father wolf, then Sher Khan, then man's cub, Mowgli, Tabaki the jackal, Akela the leader of the wolves, and then Baloo the brown bear, and the Bagheera the black panther. Yes children, so in this story Mowgli joins the wolf pack. There are totally 8 characters. Yes, 8 animal characters. So children, in Jungle Book there are so many other characters are there, but in this story, yes, we have 8 characters. Okay children, so now in the last class we have also learned about the locations. In this story there are 3 main locations like Seeonee Hill, and then Wengunga River, and Council Rock. So children, mother wolf and father wolf lives in Seeonee Hill, as we all know. And then children, Sher Khan lives near the Wengunga River. Then Council Rock means what children? Where the wolves took that important decision in Council Rocks, and especially they introduced their child in this Council Rock. Yes children. So open your English textbook children. Let's continue the story. Okay. So children, in the last class we have learned that there are main 8 characters, 8 animal characters in this story, and this story is about Mowgli who joins the wolf pack. How he joins the wolf pack we will learn in this story. Okay children, so as we all know that this story is taken from Rudyard Kipling's The Jungle Book. Yes, The Jungle Book, which is collection of stories about wild animals and their interaction with human beings. Among them, few of the stories are about Mowgli, a little boy who brought up by a family of wolves. तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि इस स्टोरी में 8 कैरेक्टर्स हैं, 8 एनिमल कैरेक्टर्स हैं, लाइक वॉल्फ, मदर वॉल्फ एंड फादर वॉल्फ, दे आर द पेरेंट्स. यस, फिर शेर खान, देन तबाकी, बलू एंड बगीरा. यस. So children, then Bagheera. Yes. So फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? Yes. जो फादर वॉल्फ, जो मदर वॉल्फ है, जो वॉल्फ का जो पैक है वो कहाँ पे रहते हैं? सियोनी हिल में. Yes. एंड शेर खान कहाँ पे रहता है? वेंगुंगा रिवर के करीब. देन जो कौंसिल रॉक होता है वो एक इम्पोर्टेंट एक प्लेस है जहाँ पे ये जो सभी वॉल्फ हैं वो क्या करते हैं, अपने जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो भी जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजन उन्हें लेना होता है वो कहाँ पे लेते हैं? वहाँ पे एक काउंसिल बना के, एक मीटिंग बनाकर वहाँ पर वो क्या करते हैं, काउंसिल रॉक में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लेते हैं. स्टूडेंट, सो अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो पार्ट है इस स्टोरी का आज हम जानेंगे. ओके. So children, open your English textbook, page number 38. Yes, it was very warm evening in the Seeonee Hill. Father wolf woke up from his day's rest, and mother wolf lay with her cubs. So as we all know children, what is meant by cubs? Cubs means the young ones of a wolf, tiger or lion. Okay, young means baby. Okay, the young ones of wolf, tiger or lion, they are called cubs. Okay. It is time to hunt again, said Father Wolf. He was going to spring downhill when Tabaki the jackal came and said that Sher Khan has shifted his hunting grounds and he has told me that he will hunt among these hills for the next moon. तो बच्चों, जो तबाकी क्या होता है, जो वो इन्फॉर्म होता है, मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है शेर खान को बताता है, और जो शेर खान की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मदर वॉल्फ और फादर वॉल्फ को आकर बताता है. तो तबाकी क्या बोलता है, अभी आने वाले चांद तक क्या करेगा, शेर खान यहाँ पे शिकार करने के लिए सियोनी हिल को आ रहा है. ओके. देन ही हैज़ नो राइट, फादर वॉल्फ बिगैन एंग्रीली.
तो जैसे बच्चों अभी हमारे यहाँ पे भी एक रहने की कुछ कायदे कानून होते हैं, वैसे ही इन दिस स्टोरी द लॉ ऑफ जंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. यस, तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ नो वन कैन हंट on Seoni Hill without permission of the wolves. Yes, so children, but Sher Khan has not followed some rules of jungle. Yes, so in this story the jungle law is very important children. According to that law no one can hurt, no one can hunt without permission. Yes children, so Mowgli is a cub. They called Mowgli like insani bachcha. Yes children, so Sher Khan called Mowgli as इंसानी बच्चे. चिल्ड्रन, तो आपने भी सुना होगा. तो अकॉर्डिंग टू द जंगल लॉ नो वन कैन किल इन सियोनी हिल विदाउट देयर परमिशन. चिल्ड्रन, तो एक जंगल के लॉ के मुताबिक जो सियोनी हिल में जो लोग रहते हैं वो शेर खान वहाँ पे आके किसी का शिकार नहीं कर सकता, किसी को हंट नहीं कर सकता. यस, विदाउट परमिशन. तो ये क्या होता है, एक जंगल का रूल होता है, लॉ होता है, लेकिन शेर खान उसको क्या करता है, फॉलो नहीं करता है. यस, तो दोनों क्या हो गए हैं, एनिमी हो जाते हैं. कौन? यस, मदर वॉल्फ, फादर वॉल्फ एंड शेर खान. ओके, सो ही हैज़ नो राइट. फादर वॉल्फ began angrily. By the law of the jungle he has no right to change his quarters without due warning. Yes, so यहाँ पे क्या होता है, he has no right. Who has no right children? Yes, you are right. That the Sher Khan has no right to change his quarters without due warning. Warning दिए बिना अपना जो ठिकाना वो नहीं चेंज कर सकता. Yes children, so he has no right to change his quarters without due warning. So he has been lame in one foot from his birth, so not able to walk properly. What is mean by lame children? Yes, as I always says children, when we reading something new we came across with many new words, isn't it? So what you have to do children, you have to underline those words and you have to write its meaning. Okay, so what is mean by lame children? Lame means not able to walk properly. Okay, so he has been lame in one foot from his birth. That is why he has only killed cattle. Now the villagers of the Wengunga are angry with him and he has come here to make our villagers angry. This is very dangerous for us. So mother wolf said. जो cattle means वो क्या करता है, a killing a person. Okay, तो वो जहाँ पे पहले जो शेर खान रहता था वो क्या करता था, वो इंसानों को गाँव के जो अपने एरिया होता है उस बाहर आके जो इंसानों को क्या करता था, किल करता था. यस, तो इसीलिए जो विलेजर्स थे वो सभी क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे. यस, तो अभी क्या कर रहा है शेर खान, हमारे यहाँ पे आके भी अभी क्या करेगा, वो इंसानों को खाएगा. तो फिर जो लोग होंगे वो हमसे परेशान हो जाएंगे. यस, अगर ऐसा होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही डेंजर है. सो हु सेड दिस चिल्ड्रन? यस, द मदर वॉल्फ सेड दैट दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. यस, so I must go now, said Tabaki quietly. Tabaki said, okay, now my work is done, and I must go now. So you can hear Sher Khan below in the woods. Yes children, so here Tabaki said that I must go now, you can hear Sher Khan below in the woods. So Father Wolf listened, and below in the valley he heard the whine of a tiger. Yes, who had caught nothing. So he wants to hunt man, said mother wolf. तो क्या बोलती है मदर वॉल्फ, अभी उसको कोई नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ इंसानी बच्चों को क्या करेगा, इंसान को क्या करेगा, शिकार करेगा, उन इंसानों का हंट करेगा. यस, मतलब इंसानों का वो अभी शिकार करेगा. यस चिल्ड्रन, ही वांट्स टू हंट मैन, सेड मदर वॉल्फ. सो चिल्ड्रन, फादर वॉल्फ लिसन, एंड below in the valley he heard the whine of a tiger who had caught nothing. So he wants to hunt man. So said the mother wolf. Man, said father wolf. So the father wolf said, see here children. Yes, the father wolf said, man, said father wolf, showing all his white teeth. Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man, and on our ground too?
क्यों? हमारे यहाँ पर ज़मीन पर कोई इंसेक्ट्स नहीं है, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, उन सब को छोड़ के वो इंसानों को खाएगा. द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीज़न, yes, forbids every beast to eat men. The real reason for this is that man killing means sooner or later the arrival of man on elephants with guns and with hundreds of men with gongs and rockets and torches. Then everybody in the jungle suffer. Okay, so children, something is coming uphill, said Mother Wolf, twitching one ear. Twitching one ear means to make sudden movement. Okay, so get ready. The bushes means what children? Sound paper or leaves make. Okay, sound paper और जो सूखी हुई पत्तियों से जो आवाज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? bushes. Okay, rustle a little in the thicket and Father Wolf dropped with his haunches under him. So children, see here. Yes, so something is coming uphill, said Mother Wolf, twitching one ear. And get ready, the bushes rustled a little in the thicket, means a dense group of bushes or trees. And Father Wolf dropped with his haunches under him and ready for his leap. Then the wolf checked in mid-swing. The result was that he shot up straight into the air for 4 or 5 feet, landing almost where he left ground. So children, see here. First look at this picture, children, see. Here you can see man, he snapped a man's cub. Look, a man's cub. तो बच्चों, जैसे ही कुछ पत्तों की जो सूखी जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, जब उनसे कुछ आवाज़ आती है तो वो क्या करते हैं? यस चिल्ड्रन, तो वो क्या करते हैं? चलो अब क्या हो गया है? तो बच्चों क्या बोलते हैं? चलो अभी कोई आ रहा है और वो जो वॉल्फ होता है अपनी एक लंबी 5 से 6 फीट की 5 to 6 फीट जो छलांग मारने के लिए वो क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है. जब वो छलांग मारता है तो वो देखता है कि वहाँ पर क्या होता है? कब यानी वो जो लॉयन और जो वॉल्फ के जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको क्या बुलाते हैं? वो कब्स करके बुलाते हैं. तब वो देखता है, देखो ये तो एक इंसानी बच्चा है. यस, एक जंगल में इंसानी बच्चे का पाया जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज, नो? इफ़ यू फाउंड, yes, if somebody founds in jungle a man's cub, that means it's strange, no children? Yes, so they are very shocked. The wolf was very shocked to see a man's cub. So children, see, man, he snapped. Who snapped, children? Yes, you are right, that wolf snapped. Oh no, see here, this is a man's cub. Yes children, so here see. So man's cub, directly in front of him, holding on by a low branch, stood a nacked. Nacked means मतलब कुछ भी पहना ना हुआ. Okay, nacked means what children? What is meant by nacked? N-A-K-E-D means nothing. Okay, the boy wear nothing. Yes, so कुछ भी जो कपड़ों पे, जो बॉडी पे कुछ भी अगर कपड़े नहीं होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? नैक. यहाँ पे आप देख सकते हो. यस, सो चिल्ड्रन, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, होल्डिंग ऑन बाय अ लो ब्रांच, स्टूड अ नैक्ड बेबी. यस, बेबी छोटे बच्चे हैं तो कोई कपड़े पहन के आता है नहीं. यस, सो अ नैक्ड बेबी कुड जस्ट वॉक एंड ही लुक्ड अप इनटू फादर वॉल्फ्स फेस एंड लाफ. वो जो लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर. यस, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, holding on by a low branch, stood a nacked baby. Here we can see a nacked baby, a children who could just walk, and he looked. Who looked, children? That little baby looked up into Father Wolf's face and he laughed. Who laughed? Yes, you are right, the little baby laughed. Is that man's cub? Said Mother Wolf. That Mother Wolf said, is that man's cub? A insani bachcha hai? Then I have never seen one. Bring it here. The Mother Wolf said, I have never seen a man's cub. Bring it here. मैंने इससे पहले कभी भी एक इंसानी बच्चे को इस जंगल में नहीं देखा था. उसको यहाँ पे लेके आओ. कौन बोलता है? यस, जो मदर वॉल्फ होती है वो बोलते हैं. तो बच्चों अभी क्या हो गया है? ये जो बच्चे का नाम क्या है? इसी बच्चे का नाम क्या है बच्चों? मोगली है. अब इस मोगली को ये जो मदर वॉल्फ है, जो फादर वॉल्फ है, यही क्या करते हैं? उसको पालते हैं, पोसते हैं.
ओके, यानी यही इनके ग्रुप में ही वो रहकर क्या होता है, बड़ा होता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी we will see in our next class. This is very interesting story children. Yes, I hope you are enjoying it. Yes children, so here now we can see that the directly in front of the wall, holding on by a low branch, stood a neck baby. That baby's name was Mowgli. Yes, that baby is Mowgli. Yes children, so who could just walk children? That baby. And he looked up into father's wall face. Who looked into father's wall face? Yes, that little Mowgli, and he laughed. So children, the next part of the story we will see in our next class. Till then, stay home, stay safe. So write at least 25 new words and its meaning in both languages. Okay children, so I hope you enjoying it. Thank you, bye bye.